السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن ان پلانٹس، اس کے بعد کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن ان اینیملز ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن جیسے کہ ہم نے کل بتایا کہ کوآرڈینیشن مینز دا ورکنگ ٹوگیدر آف ویریس آرگنز آف این آرگنزم ان اے سسٹمیٹک مینر سو ایز ٹو پروڈیوس اے پراپر ریسپانس ٹو دا اسٹیمولے از کالڈ کوآرڈینیشن۔ اس میں ایک ٹرم آئی تھی اسٹیمولے۔ اسٹیمولے مینز دا چینج ان دا انوائرمنٹ ٹو وچ دا آرگنزم ریسپونڈ اینڈ ریئیکٹ از کالڈ اسٹیمولے۔ تو آج جو کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن میں ہمارے پاس ہے پلانٹ موومنٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے پلانٹ موومنٹس۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پلانٹ ہارمونز، پہلے ہم پلانٹ موومنٹس دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دا موومنٹس ان پلانٹس آر ناٹ ایز اپیرنٹ ایز ان کیس آف اینیملز۔ Plants show only two different types of movements. One is tropic movement, which is also called as tropism. Another is gnostic movement, which is this second type of movement. The tropic movement, we will discuss this, what is tropic movement, or we can say tropism. Tropic movement is the directional movement or orientation of a specific part of plant in response to external stimuli is called tropic movement or tropism. یعنی کہ جو ٹراپک موومنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکشنل موومنٹ ہوتی ہے ایک پلانٹ کے اسپیسیفک پارٹ کا، تو اس کا جو سٹیمولے، جو ایکسٹرنل سٹیمولے اس کو مل رہا ہے اسی کی طرف اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ آگے ہم بتائیں گے کہ یہ ٹراپک موومنٹس میں، ٹراپزم میں کون کون سے ایکسٹرنل سٹیمولے ہیں جن کو ہم انوائرمنٹل سٹیمولے جس کے لیے یہ ریسپانس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا ٹراپک موومنٹس آر very slow. The movements of plants can either be towards the stimuli or away from the stimuli, or we can say stimulus. The movement towards stimuli is called positive tropism. ایک ہے positive tropism، تو دوسرا ہے negative tropism. پازیٹیو ٹراپزم جب موومنٹ ٹورڈز دا اسٹیمولے ہوگا، ٹھیک ہے، تو جب موومنٹ اوے فرام دا اسٹیمولے ہوگا، وین موومنٹ از اوے فرام دا اسٹیمولے، دیٹ از کالڈ نیگیٹو موومنٹ، ٹھیک ہے بچے۔ تو اب ہم بات کریں گے یہ سٹیمولے کون کون سے ہیں، یعنی کہ ٹائپس آف ٹراپزم۔ واٹ آر دا ٹائپس آف ٹراپزم، اور وی کین سے ٹراپک موومنٹ۔ ٹراپک موومنٹ، دیر آر 5 ٹائپس آف، اس کے 5 ٹائپس ہیں جو سٹیمولے، اس کو انوائرمنٹل سٹیمولے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے فوٹو ٹراپزم، فوٹو ٹراپزم۔ نمبر 2 جیو ٹراپزم۔ نمبر 3 ہائیڈرو ٹراپزم۔ نمبر 4 کیمو ٹراپزم، اینڈ نمبر 5 از تھگمو tropism. Let us discuss these tropic movements one by one. First, phototropism. We know phototropism. Photo means light. When the movement of a plant pot in response to light is called phototropism. جب پلانٹ پارٹ کی موومنٹ ٹورڈز لائٹ ہوگی، ٹراپزم مینز موومنٹ،
photo means light. Movement towards light होगी plant part की, that is called phototropism. Plant part की shoot की generally होते हैं, ठीक है. Generally shoots generally show towards light. These shoots are positive phototropic. While roots, they show negative phototropism because they move away from the light. क्योंकि वो ज़मीन की तरफ जाते हैं, वो लाइट की तरफ नहीं जाते हैं. टहनियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आफ्ताब की रोशनी की तरफ बढ़ती हैं. तो शूट्स जो हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, और रूट्स जो हैं वो भी, उनका भी ट्रॉपिज्म होता है, लेकिन उनका नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं. They show negative phototropic moments. Okay, this is one type of phototropism. Means when the movement of a part of the plant is in response to light is called phototropism. Shoots generally grow towards the light. They show positive phototropism. And roots grow away from the light. They show negative phototropism, or we can say they are negative phototropic. Then there is another kind, that is geotropism. Geo means earth. Same definition, similar points हैं. Geotropism is the upward and downward growth of the shoot and root in response to the pull of earth, or we can say gravity. जो टहनियाँ नीचे की तरफ आएंगे अर्थ की तरह, ठीक है, तो जियो ही कहलाएंगे. If the plant part move in the direction of gravity, that is called positive photogeotropism. If the plant part moves against the direction of gravity, it is called a negative geotropism. फिर मैं रिपीट करता हूँ ये जियोट्रोपिज्म is the upward and downward growth of the plant or shoots, we can say shoots and roots in response of pull of earth or gravity. If the plant part moves in the direction of gravity, then it's called positive geotropism. If the plant part moves away from the direction of gravity, it is called a negative geotropism. Geo means earth. So roots are mostly geotropic, they show geotropism, and in some plants like banyan tree, the shoots grow like pillars, they show the geotropic movement, shoots of the banyan tree. So shoots of plants are usually negative geotropic and roots are usually positive geotropic. Then there is third one, that is hydrotropism. Hydro means water. यहाँ से सब कुछ निकलेगा. Tropic means movement. Third point, hydro ये जी. So अगर हम define करेंगे तो the movement of plant pot in response to water is called hydrotropism. Bending of roots of plant towards water show positive geotropism. तो शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है. जो टूवर्ड्स वाटर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, जो अवे फ्रॉम वाटर होगा वो नेगेटिव होगा. तो मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. देन फोर्थ पॉइंट इज कीमोट्रोपिज्म.
Chemo means chemical. The movement of plant pot in response to a chemical stimulus is called chemotropism. अब मसला ये केमिकल कौन सा है, ये कौन से केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल मूवमेंट करेंगे हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन के. फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. फ्लावर के अंदर आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अभी नहीं पढ़ा है, तो फ्लावर पॉट्स में जब हम फ्लोरल पॉट्स पढ़ेंगे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन, कार्पल, वहाँ पर पोलन जो होते हैं स्टेमिनस के ऊपर होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स स्टेमिनस से निकलते हैं. ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है ये बेंड हो जाता है, ग्रोज टुवर्ड्स द केमिकल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एव्यूलेशन में. तो यहाँ फ्लावर में जो ये कीमो फोटोट्रॉपिज्म होता है फ्लावर के पोलन ट्यूब को. तो जब ये टुवर्ड्स दिस ओवरी बेंड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फोटो कीमोट्रॉपिज्म. Then we have fifth and last one, that is thigmo. Thigmo means touch. जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो कभी इंसान के टच की तरफ जाता है या किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट की तरफ टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जाता है, या कभी कभी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाता है. जब ये ऑब्जेक्ट की तरफ टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जाएगा तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म वो कहलाएगा, जब अवे फ्रॉम तो नेगेटिव. अब मसला ये थिग्मो किस में होता है, जैसे कि आप घर में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हो किचन गार्डन में, वाइड मास, तो वहाँ पर आपका खीरे का पेड़ है या राजमन का पेड़ है, कद्दू का पेड़ है, आप उसको वो सपोर्ट रखते हैं. तो कहीं पर भी राजमन का पेड़ हो वो सपोर्ट की तरफ जाएगा, टच की तरफ जाए तो खुद को क्लाइंब करता है. इसी तरह खीरा है, इसी तरह क्यूकरबेटा भी है. सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होते हैं, वो मूव करते हैं, डायरेक्शनल ग्रोथ करते हैं रेस्पॉन्स टू द टच. देन इट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म. यानी कि टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स एनी सपोर्ट. तो अब अवे फ्रॉम सपोर्ट कौन जाता है, जैसे कि हम एक प्लांट है, जैसे कि अवे मीन्स हो गया नॉस्टिक मूवमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, जो हम उसको हाथ लगाते हैं वो सुकड़ जाता है, वो नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म दिखाता है. ठीक है, जब ये टेंड्रिल्स होते हैं इन प्लांट्स के, क्यूकम्बर है, क्यूकरबिटा है, पल्सेस हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है. कद तो 1 मीटर राजमा को पता लगे तो उस डक यह गसान टुवर्ड्स दैट, दिस इज ए थिग्मोट्रॉपिज्म. इसका टेंड्रिल होता है लॉकोट आसान से इत कन, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल, जो इसको पकड़ के रखता है. तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. इसके बाद नास्टिक मूवमेंट्स हम सेकंड में कवर करेंगे. पहले ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स का आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए. इसमें पहला है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म. कोई मुश्किल बात नहीं है. फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा प्लांट, ग्रो करेगा टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा. जब टुवर्ड्स करेगा तो पॉजिटिव है, जब अवे फ्रॉम करेगा तो नेगेटिव. इसी तरह जियो मीन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, हाइड्रो मीन्स टुवर्ड्स द वाटर, कीमो मीन्स टुवर्ड्स द केमिकल, जैसे कि मैंने पोलन ग्रेन की एग्जांपल दी. थिग्मो मीन्स टुवर्ड्स द टच, यानी कि सपोर्ट की, सब टुवर्ड्स द सपोर्ट.